कितने लोगों को फीवर था? सरकार 10 लोगों को। और कितने लोगों को एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब की? सिर्फ 2 लोगों को। डॉक्टर के बच्चों, सिर्फ 2 लोगों को। हम इधर रेजिस्टेंट होना चाहते हैं। तुम जितना एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करोगे उतना हम रेजिस्टेंट होते जाएंगे। कोविड-19 के समय तो हमारा घर चल गया था, हम रेजिस्टेंट हो रहे थे। बब्बन जी सरकार। समझाए इन्हें। During the COVID-19 pandemic, the improper use of antibiotics caused an increase in antimicrobial resistance. According to a study conducted during COVID-19, 72% of the patients were treated with antimicrobials, out of which only 8% consisted of bacterial or fungal infections. Both the worry and the improper use of antimicrobials caused an increase in antimicrobial resistance. दोस्तों के सामने नाक कटवा दी मेरी। वो लोग रेजिस्टेंट होते जा रहे, थोड़े तो रेजिस्टेंट हो भी गए। सरकार मतलब बब्बन बताए ना मेरे दोस्तों में, समझाए ना मेरे दोस्तों के बारे में। Staphylococcus aureus and Neisseria gonorrhea are almost always resistant to benign penicillin. In the past, these infections were controlled by penicillin. In urinary tract infections caused by E. coli, 1 in 5 cases show reduced susceptibility to standard antibiotics like ampicillin and fluoroquinolones. बब्बन इसे बता हम पे सरकार ने कितना इनाम रखा है? In addition to death and disability, देवा मुझे बहुत बुखार है मैम। what happened? The fever 6 degrees मैम। Is there any body Let pain? me introduce myself. This is Dr. D. I am Dr. D. I am USA written. I am very intelligent. Hi sir, doctor. I'm very scared sir. I got fever sir. Please give me some antibiotics sir. My friend got fever sir. She took antibiotics and get cured sir. How can you prescribe antibiotic like this? It's fever now. Still, you should be able to differentiate between viral and bacterial infection. Ma'am, what else you have apart from fever? Sir, I have body pains, watery eyes and running nose sir. See, there are multiple systems involved here. So there is a high chance of viral infection. And in the case of bacterial infection, there is only unisystem involved. So put her on fluids first. And ask her to come after 3 days. And if still fever doesn't subside, then do the blood investigations like CRP and CBP. And if the CRP values are above 60, then it is a bacterial infection. Then you can recommend or prescribe antibiotics to her. Otherwise, the body will get resistant to antibiotics. And Sir, if I have a patient with only fever and no other symptom, then what should I do? see, look at the pattern of the fever. Prescribe her paracetamol, which is antipyretic. And if the fever subsides within 3 days, then it is a case of viral infection. But if fever prolongs, then it is a bacterial infection. Then you can prescribe antibiotic. Do not prescribe antibiotics. पसंद थी मुझे एंटीबायोटिक्स ले तो एंटीबायोटिक्स से मुझे एंटीबायोटिक्स का रास्ता क्या पसंद थी? इस माइक्रोब के सामने मत पहुंचना। now we'll learn about culture sensitivity and talk about different lines of defense. वेलकम टू एंटीबायोटिक सिलेक्शन। वो बीमार है, वो एंटीबायोटिक को सिलेक्ट करेंगे। वो कौन है जिसने मुझे मुड़ कर नहीं देखा? हेलो एंटीबायोटिक्स, तुम्हें मुझे सही करने के लिए 3 डिपार्टमेंट में वीक होना चाहिए। दैट इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। नो, नॉट एप्लीकेबल। यस। हेलो सर वो पेशेंट को बैक्टीरिया ने तंग कर दिया सर। फर्स्ट जनरेशन है, सेकंड जनरेशन में काम में नहीं आया सर। किसने टच किया मेरे